Hello everyone, welcome to We Learn and welcome back to the class Molecular Basis of Inheritances. In the last class of Molecular Basis of Inheritances, we studied about the process of DNA replication. We studied about merge sequences, that is the conservative sequences. We studied about helicase, recruitment of single-stranded binding protein, and the role of topoisomerase. Now we will study about the DNA polymerization. So for DNA polymerization we require an enzyme which is DNA polymerase 1. DNA polymerase. There are basically 5 types of DNA polymerase in the DNA polymerase family. DNA polymerase 1, 2, 3, 4, 5. But out of these 4 enzymes, DNA polymerase 3 is most efficient enzyme. So it's higher efficiency. Because of its higher efficiency, this DNA replication enzyme is basically what we called main DNA polymerase. So DNA polymerase, DNAP. I am representing this DNA polymerase by DNAP. But this DNA polymerase is high efficiency, and it has a high efficiency of 2000 base pairs per second, so that it can replicate the DNA within very short amount of time. The other DNA polymerase 3 are not as efficient as DNA polymerase 3. Their efficiency is too low. That means they have a base pair efficiency of 10 base pair per second or 20 base pairs per second, sometimes 100 base pairs per second. But we need a high efficiency, because in order to complete the DNA replication we have got the limited time, and we are going to replicate 3 into 10 की power 6 base pair in case of prokaryote and 3.3 into 10 की power 9 base pair in case of eukaryotes. तो हमारे पास में टाइम नहीं है. Because of the limited time we need an high efficiency enzyme, and this efficiency is present with DNA polymerase 3. So DNA polymerase 3 is the enzyme which can proceed the DNA replication. That means it can basically polymerize the DNA. But इसकी एक specific requirement है, and that requirement is it requires 3' OH for its DNA replication process, for its polymerization process, and this 3' OH end should be free. तो हमारे पास में क्या होना चाहिए? It have a requirement of 3' OH and it should be what? Free. तो ऐसा मत बोलना कि ये हमारे पास में 3' end है. These 3' ends are basically not free. This is circular DNA. Basically this is circular DNA. We have this circular DNA and we are basically taking this part. There is more DNA to come and there is more DNA to replicate. So these ends are absolutely not free. These ends are not free. So in order to fulfill the requirement of DNA polymerase 3, we have another recruitment, and this recruitment is what we call Rna Primase. So Rna Primase is an enzyme which synthesizes primer over DNA, and this primer is basically a RNA primer. So this Rna Primase binds here at this part of the DNA and form a short primer, and this primer is basically RNA, and this G end, this is the 5' end of the primer, this is the 3' end of the primer, this G has 3' OH, and this end of the G is basically free. Similarly we have got a primer here, and this have got the 3' end free. Now DNA polymerase connect. तो जैसे DNA polymerase को बोलेगा कि basically we have provided you the 3' end, DNA polymerase तुरंत आ जाएगा and DNA polymerase will bind at these 3' end, DNA polymerase एक नहीं है अपने पास में, we have got many DNA polymerase. ठीक है, तो हमको replication की process start करने के लिए DNA polymerase चाहिए था. And now we have DNA polymerase,
and this DNA polymerase is also able to bind. So this was our DNA, stretch of DNA, and this was a replication fork. We have different enzymes binded to it, and these different enzymes are helicase, some single strand binding proteins, and for preventing the supercoiling there is topoisomerase. So all things have been taken care of. This is the 5' end, this is the 3' end, this is 3' end, this is 5' end. DNA helicase is moving forward in order to break the more and more hydrogen bonds. And we have a RNA primer over here, and the sequence was GCU, and this 3' end is free. Similarly, we have a part here. This is the 5' end, this is the 3' end, and this 3' end is now free. So RNA primase का काम हो गया, and RNA primase ने क्या किया है, इन base pairs को बनाया है, and this is complementary to this part of the DNA, and this is complementary to this part of the DNA. Now there is the complete role of DNA polymerase and DNA polymerase 3 basically. Now the DNA polymerase 3 would bind to this 3' end of the DNA, and जैसे ही 3' end के साथ में bind होता है, it have a very high rate of efficiency, and ये क्या कर लेगा, तुरंत quickly क्या कर लेगा, नया strand of DNA बना लेगा. DNA polymerization का जो site है, the site of polymerization is 5' to 3'. So this is the 5' end of the DNA, and this is going towards 3'. Therefore polymerization का जो direction है for DNA polymerase 3, it is 5' to 3' end polymerization. So this is the direction for DNA polymerase 3. तो DNA polymerase ने यहाँ पे भी क्या किया, एक DNA बना लिया तुम्हारा. So this pink color part is basically the new part of the DNA, and basically यहाँ पे क्या हो गई होगी, साथ के साथ में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होनी शुरू हुई होगी. This is the newly synthesized DNA. बहुत ही अच्छे से DNA polymerization चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं आ रही. जो प्रॉब्लम्स थी वो सारी प्रॉब्लम्स दूर हो चुकी है, and now DNA polymerase 3 is continuing its replication. एकदम से ये यहाँ पे पहुंच जाता है जहां से ओरिजिन स्टार्ट हुआ था. तो DNA polymerase is at this point now. ठीक है, फिर से एक प्रॉब्लम आती है. प्रॉब्लम क्या है कि ये जो DNA polymerase इस डायरेक्शन में मूव हो रहा है उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है, बिकॉज उसके लिए ये हेलिकेज काम कर रहा है. दिस हेलिकेज इज मूविंग फॉरवर्ड, राइट, एंड प्रोवाइडिंग मोर फ्री बेस पेयर. तो यहाँ पे तो ये जो स्ट्रैंड है DNA की, इट विल कंटिन्यू सिंथेसाइजिंग मोर एंड मोर DNA. बट यहाँ पे एक DNA की यहाँ पे एक प्रॉब्लम क्या आ गई कि यहाँ पे आने के बाद में और इस डायरेक्शन के अंदर स्ट्रैंड ओपन नहीं है. देयरफॉर ये वाला जो DNA पॉलीमरेज है, DNA पॉलीमरेज 3 जो है, इस DNA पॉलीमरेज 3 को यहीं पे अपने काम को छोड़ना पड़ेगा. हेलिकेज अपना जा रहा है, इस स्ट्रैंड में कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये कंटिन्यूली सिंथेसाइज हो ही रही है अपनी. सो इफ वी हैव अ लुक, तो हमारे पास में नेक्स्ट यदि डायग्राम देखें हम तो क्या होगा, वी हैव दिस DNA, एंड अभी तक उन्होंने आगे का जो पार्ट है, लेट अस से इस पार्ट को भी क्या कर दिया है, हेलिकेज ने ओपन कर दिया है. सो वी हैव दिस Y fork shape here. And this part, the DNA is continue.
हमारे पास में एक डीएनए पॉलीमरेज था जिसने डीएनए पॉलीमराइजेशन कर दिया था इस पार्ट का। इसके साथ में अटैच था एक छोटा सा आरएनए प्राइमर। दिस इज द आरएनए प्राइमर पार्ट ऑफ द डीएनए, कोई दिक्कत नहीं है। यहां पे भी हमारे पास में एक आरएनए प्राइमर था एंड जो नया डीएनए था वो सिंथेसाइज हो रहा था इस डायरेक्शन में। ये आपका प्राइमर, दिस इज द 3 प्राइम एंड। तो जैसे जैसे आगे बढ़ रहा है डीएनए पॉलीमरेज, तो यहां से छोड़ा था हमने, ये तो कंटिन्यूली सिंथेसाइज करके यहाँ पे पहुंच जाएगा। यहाँ पे हमारा हेलिकेज है, देयर इज अवर हेलिकेज एंजाइम, कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत आती है इस स्ट्रैंड के लिए। दिस इज अवर 5 प्राइम एंड, दिस इज अवर 3 प्राइम एंड, दिस इज अवर 3 प्राइम एंड दिस इज अवर 5 प्राइम एंड। अभी डीएनए पॉलीमरेज यहाँ से क्या हो चुका है, डिसअपीयर हो चुका है। डीएनए रेप्लिकेशन आगे ये नहीं कर पा रहा, तो इसने इसको साइट को गिव अप कर दिया। अब इस स्ट्रैंड को, इन ऑर्डर टू सिंथेसाइज दिस पर्टिकुलर स्ट्रैंड, वी बेसिकली नीड अनदर आरएनए प्राइमर्स। तो इस स्ट्रैंड पे छोटे छोटे इंटरवल्स के बाद क्या करना पड़ेगा तुमको, प्राइमर सिंथेसाइज करना पड़ेगा। दैट मीन्स यहां पे फिर से कौन आएगा, आरएनए प्राइमेज। आफ्टर एवरी शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम देयर विल बी आरएनए प्राइमेज and it will synthesize 5 prime to 3 prime primer, RNA primer of course, and then there will be binding of DNA polymerase again. So now the DNA polymerase can bind here. So DNA polymerase bind हो गया यहाँ पे, and this polymerase DNA causes the polymerization। इस पॉइंट तक आगे का DNA पहले से रेप्लिकेट हो चुका है। दैट मीन्स यहाँ पे पहुंचने के बाद जो डीएनए पॉलीमरेज 3 है, दिस इज द डीएनए पॉलीमरेज। कितना टाइम लगना है इसको, डीएनए पॉलीमरेज 3 को इतने बेस पेयर्स कवर करने के लिए? हाईली एफिशिएंट इन टाइम, डीएनए पॉलीमरेज इज हाईली एफिशिएंट। 2000 बेस पेयर्स पर सेकंड से चल रहा है ये, तो कुछ सेकंड्स के अंदर ही क्या कर देगा ये। दैट मीन्स दिस स्ट्रैंड ऑफ द डीएनए इज कंटिन्यूअली सिंथेसाइजिंग एंड दिस strand of the DNA is formed in fragments। तो आगे क्या होगा, DNA हेलिकेज लगातार वैसे ही मूव कर रहा है until it reaches the point of termination site, DNA polymerase on this strand is forming a continuous strand, or it is also called as leading strand. Whereas on this part of the DNA polymerase is synthesizing discontinuous strand, or it is also called as lagging strand. These lagging strands were basically first observed by a scientist which is known as Okazaki. Therefore, these fragments here are basically Okazaki fragments, are also known as Okazaki fragments. If we talk about Okazaki fragments, these have a length of 2000 base pairs. That means हर एक second के बाद there will be a one Okazaki fragment, because the speed of DNA polymerase is 2000 base pair per second. So after every second there will be more fragments. How many fragments? You can easily do this. We have 3 into 10 की power 6 base pairs. You can easily divide by 2000 base pair and we will get the number of fragments on this discontinuous strand. So basically there is a continuous strand and there is a discontinuous strand. So we can say that the process of DNA replication is semi-discontinuous. So this is how the elongation process take part. Eventually, these Okazaki fragments will be removed
and form this DNA, form a complete long stretch of DNA. So this is the role of the Okazaki fragment. This is the role of DNA polymerase 3 and how the DNA polymerase 3 synthesize a new DNA. In the next class, we will study about how these RNA primer part are removed and how the DNA proofreading is done. Thanks for watching the video. I hope you liked the video. If you have any doubt or if you want to provide your feedback, please mention in the comment section. Thanks for watching the video. See you soon on the next video.